welcome to the Beardman Show. Today I have a guest with me and a very dear friend of mine. Please introduce yourself. So I'm Shiv Chopra and I'm glad that you called me today. दो सुबह मुझको थोड़ा अजीब लग रहा था क्यों? कि पता नहीं मैं तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा Because of तुम्हारा the नाम title? बियर्ड है मैं तो शेव करके आया हूँ So, मुझे वो चीज थी बट थैंक यू फॉर कॉलिंग मी नहीं पता है in your recent post on Instagram you had a beard. मैं Yeah. सोच रहा था तेरे को मैसेज करो इस चीज का कि Bro, keep the beard on. वो मैंने ट्राई किया था मुझे बोला था कि अच्छा। रखो हाँ. बट फिर मैंने कहा नहीं उग नहीं रही है सो या फिर मैंने वो कैंसिल कर दी All right. So, yeah. नहीं but ठीक है, just to clarify a bit, the Beardman Show Beardman channel का Show. नाम इसलिए because I and Akash always keep our beards. We don't ever shave. We like ourselves like this. We are the host. That's why it's the Beardman Show. Guests लड़कियां भी आएंगी तो उनसे तो हम expect नहीं करेंगे beard उगा के आए whatever. Right. So ऐसी कोई scene नहीं है. Guests कोई भी हो, everyone is allowed. But ठीक है, the thing is that she was basically the first guest on a podcast search, and the thing is we sort of talked a little bit on Instagram, and he had some amazing things to talk about. कुछ ऐसे topics थे जो कि I truly believe आजकल society में discuss करना काफी जरूरी है, especially in India, and because he's a lawyer as well, he's an advocate, and he's practicing such cases. He's sort of doing such cases right now. So इसलिए I felt like he's an amazing person to come and discuss such things. So yes, I will let you lead, and please tell the audience what the topic is. So that we So can continue. basically today we'll talk about something जो शायद पिछले 20 साल से लोग बात नहीं कर रहे It's man matters. Right. Because the thing is कि बचपन से लेके अब तक हमें बोला गया है कि female which is not wrong. Which is not wrong at all. But किसी ने as a man मतलब मैं तुझसे पूछूंगा एक सवाल स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते वक्त Okay. कि कितने लोगों ने देखो आज तक आके बोला कि भाई ऋत्विक क्या हाल है Right. maybe your mother, maybe your sister, maybe your girlfriend at max. But किसी ने random इंसान आके बोला है कि ऋत्विक क्या हाल है किसी को पड़ी ही नहीं है Right. So उस सोसाइटी में रहना जहाँ पे हम एक इक्वालिटी का नरेटिव कैच करते हैं या हम उस चीज को सपोर्ट करते हैं Right. So अगर हम women का we ask them how are they उनका ख्याल रखते हैं So why can't कोई हमसे भी नहीं पूछ सकता वो चीज Right. So आज का I'll discuss about this thing only कि एक लड़का हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं Right. क्योंकि इस बारे में कोई बात करता नहीं है Right. Especially the things जो थोड़ी सी neglected रहती हैं. Exactly. Right. मतलब जिन चीजों के बारे में everyone is going through such things. But exactly like you said, that no one is talking about these things. जैसे, for example, I would like to bring up the name of Andrew Tate. And Jordan Peterson as well. Right? I mean, these are two guys who ruled the internet in 2022 because of such things that they talked about. Andrew Tate के बारे में I won't give a further comment because he has helped out a lot of people by motivating them. I don't know what the businesses are that he's running, and I'm not interested in them either. But I know that there are many motivational quotes and there are many things that he said on podcasts that have helped a lot of people, that have helped a lot of men specifically. So I think that is a good place. But if you're talking about Jordan Peterson, or if you're talking about anyone else who's discussed how men suffer more than women do, or how men don't get the sort of validation that women get because of the suffering that they have to go through on a day-to-day basis, I don't think, yes, people have addressed this issue, but किसी ने बात नहीं करी how to fix it. Bro, the thing is कि कोई ये level play field नहीं है, ठीक है? और मैं या even तू जो Andrew Tate को follow करते हैं, we are not defending his बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें also. Right. We are just talking about the good part he says. आज तक यार मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ कोई बंदा मेरे सामने आ रहा है I have had a very hard day today. अब मेरे पास कोई शेयर करने के लिए बंदा नहीं है बिकॉज नहीं होता हम लड़के भी शेयर नहीं करते ब्रो. आई रिमेम्बर कि आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच वंस तो उस टाइम में मैं ग्रुप पे फुटबॉल की बातें कर रहा था. अच्छा ठीक है. You're not talking about that because हैबिट नहीं है तो किसी ने पूछा नहीं आज तक. So फिर then I see this person on my feed कि यार जो बता रहा है कि ब्रो उठ एक्सरसाइज कर मोटिवेट कर अपने आप को वैल्यू कर. सो मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूँ. जो उसके बाकी रिमार्क्स है गुड बैड अगली है ब्रो वो बड़ा सब्जेक्टिव चीज है यार. पता है आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे उसने एक लाइन क्रॉस करी थी काफी ज्यादा और ऑब्वियसली मैं उसको कभी डिफेंड नहीं कर सकता. एंड पता है एक्चुअली देयर वाज अ पॉइंट व्हेन I was not exactly the biggest fan of Andrew Tate at a point of time when the whole internet was. And the way I used to defend myself by, for not liking him was basically that he's saying 4 right things, but then he's also saying 2 wrong things that are wrong. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक चीज बताई थी, कहता कि यार अगर मान ले तेरे को सर में दर्द है and you go to a doctor,
ठीक है, and the doctor gives you a medicine, will you follow him? I was like, yeah, of course I'll follow him because I know that the doctor can help me. He was like, right. But then he asked me, do you drink? I go, yes, I do drink. I consume alcohol and stuff. So उसने अगर वो तेरे को आगे ये चीज सेम बोले कि don't drink alcohol, it's wrong for you, will you listen to him? I was like, नहीं, I probably won't because it's a lifestyle choice that I've made. So that's what he said basically. कि चल ठीक है, if he is telling you some things that you can abide with and some things that you cannot abide with, that does not mean that the things that you cannot abide with are wrong. I mean, I still disagree with that, but then एक acceptance वाला factor आ गया, and that is when I started liking him, and उसके बाद तो I don't think that there was any going back. Bro, अगर हम gender equality की बात करें और उसमें हम अगर एंड्रू टेट के कमेंट्स ले जो बेसिकली सामने जेंडर के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है या अजीब लगता है वो, तो ऐसे तो एंड्रू टेट पहला नहीं है. अगर हम देखें तो अगर ऑपोजिट जेंडर में कार्डी बी है, कार्डाशियंस हैं, वो कोई तुम्हें कोई प्राइम लेवल का एग्जांपल सेट नहीं कर रहे, राइट. उससे भी बहुत सारी लड़कियां इन्फ्लुएंस हो रही हैं इन अ वे रॉन्ग वे. सो हम यहाँ पे उस चीज को कंडेम नहीं कर रहे जो चीज गलत है, राइट. हम उसे सपोर्ट कर रहे जो हमारे लिए ठीक है, राइट. अगर मेरे पास कोई इंसान है जिसको मैं देख रहा हूँ या फॉलो कर रहा हूँ जो आई गेस मुझे मोटिवेट कर रहा है टू बी अ बेटर पर्सन इन लाइफ, और मैं आसपास के लोगों को किसी हार्मलेस उनके लिए, सो आई विल फॉलो दैट ओनली ना, राइट. ऑफ कोर्स बाकी जो उसकी पर्सनल चल रहा है वो चल रहा है, वो तो हर बंदा बुरा होता है, संजय दत्त भी संजय दत्त है ना, राइट राइट राइट. तो दैट डजंट मैटर, द थिंग मैटर्स इज कि किसी इंसान ने आके हमको ये बोला कि ब्रो तेरी वैल्यू है, तुमने वैल्यू कर. सो उस चीज में आई गेस वी डिड कनेक्ट by subjective. Yeah, I agree with that. Of course, yeah, मतलब देखो सबकी अपनी opinion है, and here at the Beardman Show especially we respect everyone's opinions. Exactly. On camera and off camera, our opinions are very much reflected into society. But इसका मतलब ये हमेशा जरूरी नहीं होता that if my opinion is clashing with yours, that does not mean that we have to fight. Exactly. It's a big enough world for all of us to be able to live here, right? So that's what I feel essentially. तो हाँ मतलब ठीक है. But if they're talking about gender equality, now this is again one of the things that I don't like about Andrew Tate. There's some host, some TV show host based out of UK. I'm forgetting his name, याद नहीं आ रहा. The TV news host. Yeah, that one. हाँ जिसने 2 interviews करे with Andrew Tate, right? So उसमें the guy basically, the host asked Andrew Tate that I mean according to the way you speak about certain things, it is sort of shown that you are not against basically the Taliban invasion of Afghanistan, and you're not against the fact that they are sort of not letting their women study, and you're not they're not letting them go to schools and stuff like that, and they're putting a lot of basically rules upon them that they have to live with, or they cannot live in the country basically. So to that his answer was that okay, so I'll tell you something, why don't we send all the feminists to Afghanistan and we'll ask them to fight off Taliban. The thing is that okay, that particular sentence that makes a lot of sense, that if you're fighting with, I support that. आज अगर मैं एक लड़की हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट किसी और लड़की के राइट्स जो कि बिल्कुल प्रिविलेज सोसाइटी का पार्ट नहीं है, राइट. ब्रो तुम घर बैठ के पिज्जा खा के ट्वीट कर रहे हो अबाउट समवन जिसको शायद तुम्हारे ट्वीट से फर्क भी नहीं पड़ेगा. सो मैं वही चीज बोलता हूँ कि फेमिनिज्म इज फॉर दोज पीपल जिसको उसका मतलब ही नहीं पता, राइट. आज तुम घर बैठ के ट्वीट कर रहे हो कि ब्रो वहां पे तालिबान की लड़कियां जो मतलब जो वहाँ पे नेटिव्स हैं पाकिस्तान की, उनकी राइट छिन गए हैं, एवरीथिंग है. तुम्हारे घर में जो हाउस हेल्प आती है वो रोज अपने हस्बैंड से पिटती होगी, होता है, probably. उसकी भी बच्चों को एजुकेशन नहीं होता, वो भी काम करते किसी घर जाके, राइट. तो अगर तुम ग्रास रूट लेवल से तुम एक्शन नहीं लोगे तो किसी और कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करना इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट. तो अपने आसपास देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि हम तुम इतने पावरफुल हो जाओ कि तुम्हारे वॉइस मैटर करे, बस सबसे पहले लुक अराउंड योरसेल्फ, राइट. क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है. हम एक प्रिविलेज क्लास के हैं. आई टेल यू एग्जांपल. सब कॉलेज में ना हमारे लॉ में लीगल एड होता है, ओके, ठीक है. सो लीगल एड में बेसिकली वी गो टू villages and small towns and we just gives them some legal advice. So इसमें एक था I guess third year before COVID. So we went to this village. वहाँ पे हमने उनको लाइक अपने फीमेल राइट्स वगैरह समझा रहे थे कि how you can act upon that. So I guess as a man, even में लड़कियां भी थी, वो चीज इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग फेमिनिज्म, कि तुम किसी को जाके उनके राइट्स के बारे में एजुकेट कर रहे हो एंड पावर दे रहे हो, rather than tweeting उस जगह जहाँ पे वो क्लास या सेक्शन सोसाइटी है ही नहीं, राइट. उनको ट्विटर का मतलब नहीं पता. आज के हाउस हेल्प ट्विटर बोलेगी क्या है, राइट. Definitely makes sense. So feminism is all about जो
बेसिक चंक है अबाउट एजुकेटिंग दोस, हेल्पिंग दोस जिनको उनका मतलब नहीं पता। हाँ, मैं मानता हूँ कि वर्क प्लेसेस पे या इवन सोसाइटी में होता है, ठीक है, एंड वो डील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द मेजर इशू इज अगर तुम किसी और के बारे में पोस्ट कर रहे हो, और एंड्रॉइड ने बहुत सही बात बोली यार, कि वो किसी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर है, तुम जाके बिकॉज यू नीड मैन ना फॉर दैट, तो किस चीज की इक्वालिटी तुम डिमांड कर रहे हो, राइट, ठीक है। सो मेरे ख्याल से वो उसका सेगमेंट आई गेस का बोलने का ढंग काफी लाउड होता है, या मे बी, या हो सकता है, कुड बी वो एक विलेन बन चुका है। हाँ, एग्जैक्टली। शक्ति कपूर के मुंह से अच्छी बात लगेगी ना शक्ति, क्योंकि शक्ति कपूर है, राइट, मगर सेम चीज अगर कोई अर्जुन कपूर बोले या कोई अदर एक्टर बोले तो वो एक इमेज का वो होता है, राइट, डेफिनेटली वो एक इमेज का वो चीज होती है। सो मेरे ख्याल से जो उसने बोला वो ठीक है। फेमिनिज्म बहुत ज्यादा है, ओवर टॉक्ड हो गया, ठीक है, एंड बहुत जगह यूज होता है। मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ। सो लास्ट मंथ आई वाज डूइंग अ जॉब एक लॉ फर्म में। सो वहाँ पे ना फैमिली कोर्ट्स होते हैं हर कोर्ट में, ठीक है, ठीक है। फैमिली कोर्ट में ब्रो तो तुम बैठेगा ना, तेरा विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, वहां पे यार आज एक लड़की मुझ पे एक एलिगेशन लगा देना कि ब्रो 498 लगा दे, क्रूएल्टी लगा दे, डोमेस्टिक वायलेंस लगा दे। क्या है सारी चीजें? तो बेसिकली 498 आईपीसी सेक्शन है, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रूएल्टी वगैरह सेक्शन है ये। ऑलराइट, कि तुमने लाइक शादी पे हमें मारा पीटा वगैरह। अच्छा, बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस, ओके, बहुत डेथ पे, लाइक आई वोंट गो। सो वो लगा दिया ना, वो तो फिनिश है, बिकॉज एज अ मैन विदाउट एनी एविडेंसेस। एविडेंस क्या होगा? आज एक लड़की ने बोल दिया मुझे मारा है, ठीक है। जब भी कोई डाइवोर्स की फाइल इंडिया में होता है ना, जो मैं जनरली देख रहा हूँ आजकल, उस पे हमें केस जीतना है, अच्छा, ठीक है, तो मैं किसी पे ऑब्वियसली ओवर एग्जैजरेट करके ना चीजें डालूंगा। मेरी से लड़ाई हुई, ठीक है, अब मुझे क्या करना है घर पे, उसके लिए नोटिस भेजना है, राइट, काम खत्म, ठीक है। मैं कोर्ट जाता हूँ, जजेस के से मिलता हूँ, पुलिस से मिलता हूँ रोज। वो इंसान बेचारा मैं लॉयर हायर करेगा, फिर अपना काम छोड़े कोर्ट आएगा, फिर वहां पे अपने आप को डिफेंड करेगा। हरासमेंट कोर्ट में भी होती है, अच्छा, मेंटल हरासमेंट होती है ना, राइट, जा रहे हो, इंटिमिडेटिंग होती है काफी, किसी जज के सामने जाने में ना ऑनेस्टली लोग फटती है, क्योंकि सामने वाले ने जो बोल दिया तो तुम गए, अगर कुछ बोल दिया उसने तुम उस बिल्डिंग पे हो, जस्ट सब काला कोट पहन के घूम रहे हैं। सो उस तो बेसिकली पावर है, बट अगेन यार ये पावर को एक्सप्लॉइट लोग करते हैं। बट यहाँ पे हम उसका एक बेटर साइड की बात करेंगे। बट हाउ इज दिस? नहीं, बिफोर वी गो टू द बेटर साइड, बिकॉज यू आर अ लॉयर एंड लाइक यू सेड दैट यू आर नाउ प्रैक्टिसिंग लॉ, तो मुझे ना थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता कि व्हाट इज द एक्सप्लॉइटेशन लाइक, एंड एक्सप्लॉइटेशन किन टर्म्स में होती है, एंड व्हाई एम आई आस्किंग दिस इज बिकॉज सी I know that if someone's accused of something, they are innocent until they are pleaded guilty, मतलब until they are proven guilty, right? But ऐसे क्या cases होते हैं, especially because we are talking about man matters and how you started this की मतलब काफी false accusations वाला scene रहता है. That is why I want to know कि ऐसे क्या scenarios रहते हैं, मतलब some real life scenarios if you can share, जहाँ पे without any evidence, without a person actually being proven guilty is suffering. Because there are some cases that I have heard जहाँ पे, and I don't exactly remember all the details. So the thing is कि I read this, एक इंसान था who went to jail for some 21 years in total. और उसके, and because he was charged with a sexual assault का case, and it was then, मतलब after he turned some 45-46 years of age, उसके बाद it got proven कि अच्छा नहीं, you know what, go back home, because the woman who charged all these things just came to us and said कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था. So उस इंसान की तो लाइफ खत्म बिल्कुल. So what are such, मतलब what exactly happens in such cases? वो सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो है। दिस इज बहुत स्लो है सिस्टम वो। सेकेंडली हम दूर नहीं आते, आई गेस सबसे 7-8 साल पुरानी बात है, तब फेसबुक बड़ा प्रोमिनेंट था, इंस्टाग्राम इतना था नहीं। स्कूल्स में केस था एक सिख लड़के का, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट के वहां पे, अच्छा, तो बेसिकली उस पे ये एलिज था कि उसने लड़की को छेड़ा है। अच्छा, उनका नाम सुखविंदर से कोई नाम था उनका, ओके। सो बेसिकली उस लड़की ने कुछ नहीं किया, उस लड़की ने एक फेसबुक पे बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाला कि मेरे साथ इसने हरासमेंट करी है, रिमेंबर द केस रिमेंबर नो, यस। अब ब्रो उसकी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री आई थी, अच्छा, YouTube पे, आई गेस किसी नॉर्मल YouTube चैनल ने आई गेस उसकी प्रमोट की थी, पब्लिश की थी, तो उसकी प्रॉपर इंटरव्यू आया था एक डॉक्यूमेंट्री के साथ, अच्छा, डॉक्यूड्रामा टाइप था उसका, द गाय हु वाज अक्यूज्ड। वो उसके बाद पता कितना बुरा हुआ, एक फेसबुक पोस्ट ने
अब क्या होगा ना कि ये मैं गलती लड़कों की बताता हूँ, आज कोई लड़की पोस्ट डाल देगी ना, एक लड़का बोलेगा हाँ लड़की गलती होगी, ये फैक्ट है, ये है बिकॉज ये फैक्ट है, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसी है ना, कंडीशनिंग ऐसी है, प्लस ये भी चीज ऐसी है कि यू नो एक माइंड में रहता है कि यार लड़के ऐसा हो। पता नहीं, I'll tell you, when I was a kid, I was always told by my guardians, not just by my parents, by everyone who's elder to me, respect girls. This was something that I was conditioned to live with, that you have to respect girls at at a larger than life level, at a larger level than you have to respect guys at. Just say if your brother is saying something, you can ignore him for a second. But if your sister is saying something, if a female friend of yours is saying something, you have to prioritize that. And by to be honest, still that has made me a very, I believe that has made me a better man in life because I've learned a lot from that. But then there are many instances where I've suffered a lot because of such things. I've suffered a lot because I've been told to respect women. और लड़कियां खेल के चली गई भाई। बट थोड़ी सी पर्सन, और बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल, ऐसा रिलेशनशिप लेवल पे मेरे साथ लड़कियां खेल के चली गई, कूल, सबके साथ होती है, लड़के भी खेल के जाते हैं। बट आई बिलीव दैट इफ आई हैडंट बीन टोल्ड कि नहीं ठीक है, यू नीड टू रिस्पेक्ट वुमेन ऑल द टाइम, तो आई थिंक काफी चीजें अवॉइड हो सकती थी। ब्रो आई थिंक ये थोड़ी सी डाउन साइड है, एक बहुत बेसिक लेवल पे। बेनिफिट और डाउट होता है, वो भी ना लॉ में कहते हैं रीजनेबल ग्राउंड होता है, रीजनेबल ग्राउंड। अब सोच वो लड़के से कोई पोस्ट आया, 24 घंटे के अंदर उसके एफआईआर हो गई, उसके बाद पुलिस आ गई, उसकी जॉब चली गई, उसको पुलिस स्टेशन में कितना उसको हरास किया गया होगा, बिकॉज एक नेशनल न्यूज बन चुकी है, मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली बहुत ज्यादा होता है। उसके वो बंदा सोचो घर भी गया होगा, सोशल मीडिया खोला होगा उसने, उसका नाम हाईलाइट हो गया, गालियां बढ़ रही हैं हर जगह से, उसकी जॉब चली गई। वो अभी आई गेस 25-26 का अगस्त टाइम पे जो उसके फ्रेंड्स होंगे या उसके एक्वेंटेंस होंगे, उसकी शादी की उम्र भी आने वाली आगे, वो भी गई, सब खत्म। उसके रिश्तेदार उसे बोलेंगे, उसके आसपास दोस्त लोग, फीमेल फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक, और ये चीज बोली भी है कि उसके आसपास शायद उसकी माँ के अलावा ना, या उसकी बहन के अलावा एक लड़की भी नहीं आई। अच्छा, एक ना लॉ का मैगजीम है, ऑडी आल्ट्रम पार्ट्रम, लैटिन मैगजीम है, व्हिच ट्रांसलेट टू, व्हाट्स द नेम अगेन, ऑडी आल्ट्रम पार्ट्रम। ओके, एक जज किसी भी जजमेंट से पहले दोनों साइड की सुनता है, ओके, एंड तब वो अपने जजमेंट पास करता है। उसका ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, उसको एक दिन में बना दे विलन, नेशनल न्यूज बन गई, न्यूज चैनल्स में आ रहा है वो, सो कॉल्ड सूडो फेमिनिस्ट लड़कियां उसको अपने किसी फॉल्स नैरेटिव ज्वाइन करके कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, वो अगेन अपने आप को डाउन प्ले करके ऐसा कर रही है। उसकी लाइफ खराब हो गई, उसके डैड को आई गेस 2 बार उसकी हार्ट की सर्जरी हुई है। अच्छा, आफ्टर दिस केस वाओ, फाइनेंशियली वाज फक्ड बिकॉज़ जॉब रही नहीं उसकी। सोसाइटी में क्या काम करेगा वो, पढ़ा लिखा इंजीनियर, क्या करेगा? इंजीनियर कुछ भी नहीं। एक इंसिडेंट की वजह से, एक फेसबुक पोस्ट की वजह से उस लड़की को क्लाउड मिल गया, वैसे टेंशन वहां मिलती है, और मिल गई, ठीक है, सिंपैथी मिल गई। किसी ने भी जाके रेक्टिफाई नहीं किया उसकी लड़की के साथ कि भाई एक्चुअली हुआ क्या था। ऐसा ही ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि तू एक बार 100 झूठ बोलेगा ना, यस 100 बार एक झूठ बोलेगा, नहीं ठीक है, आई गेट व्हाट यू सेइंग, तू 100 बार एक झूठ बोलेगा ना, सच बन जाएगा, वो इमेज सच बन जाएगा। अब उसकी लाइफ चली गई, अब 5-7 साल बाद जब कुछ निकला ही नहीं, तो क्या करेगा? बट पता है, I'll tell you something, जैसे इसमें पता है क्या होता है, सूडो फेमिनिस्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करूंगा। देयर वाज दिस कोरा पोस्ट दैट आई रेड ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन रेडिट, ये फेमस हो गई थी, द बेसिकली अ कट आउट ऑफ अ कोरा आंसर। तो उसमें था कि वुमेन बेसिकली सेड कि चलो ठीक है, आई डोंट वांट टू बी विद माय हस्बैंड एनीमोर एंड आई एम चीटिंग ऑन हिम, but I don't know how to break this off because I already have a kid with him and now I don't know कि आगे क्या होगा। So basically to that an advocate replied, she was a female advocate, and she said कि चलो ठीक है, I'll help you out with this. First of all, don't ever tell your husband that you're having an affair with someone else, that it's an open relationship or whatever, that you're sleeping with someone else or something like that. दूसरी चीज, we'll file some harassment suits on him. You'll have to make some scars and stuff like that on your neck and on your face and some other parts of the body, and then you will also file a charge कि अच्छा ठीक है, this marital rape वाला scene भी होता है, तो मतलब, and उसके बाद basically so there were 2-3 ऐसी things, I don't remember the whole post, and end में it was written कि चल ठीक है, I believe in women power, so fuck that guy and I'll help you out. And I read that and I was so shocked कि भाई मतलब how are such people existing? And I'll tell you why we as men are also a little bit responsible for this. We are. I'll tell you why. See, there's a lot of unity when it comes to women.
they believe in, okay, so the pseudo feminists or the feminists, they all have some sort, even though women, जैसे एक ना एक हिंदी में कहावत है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, that is true in case of relationships and stuff like that. But generally I feel that जो women की एक जो feminine force होती है ना, वो काफी unity वाली होती है. Men are always people who are standing alone, who are doing their work alone, who are not asking for help. ठीक है, that is I believe in today's day and age. ठीक है, अगर किसी की एक नेचर ऐसा है, किसी का एटीट्यूड ऐसा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. बट इन टुडेज डे एंड एज वेयर दे आर being exploited for because of this nature, that this particular nature that they carry, I believe that this can be a little problematic for them as well. Because agar wo aadmi jo tha, he was an engineer, if some men who sort of probably had some sort of a good influence, maybe in the corporate world, maybe in the job sector, maybe in some business or something like that, why did not they come up to help that guy after he was proven completely innocent? Getting it? Because his life is now fucked. If something similar happens to a woman, and I don't mean to be insensitive here, but if someone's a victim of sexual assault, or if someone's a victim of something like domestic assault or something like that, something horrible that should not happen to women. At the end of the day, women also do know that there are some women who are sitting somewhere, or the government as well, who will come for their aid, who will help them out a little bit. But the similar scenario is not for men. Now, if a man has done something like, a sexual assault or domestic violence, being a man, I don't believe that they deserve a second chance. I believe that their life should be screwed if they've made such mistakes. I don't believe that there's any correction facility which can fix them, or I don't believe that they deserve a second chance. But men who are being falsely accused, जिससे लड़कियों को क्लाउड मिलता है और लड़के गए, ठीक है, why are we as men not standing up for such people? Why is there no Facebook page or some community somewhere or something like that who's saying, chalo theek hai, we'll only focus on the guys who are falsely accused and we'll help them out, especially the guys whose lives have been ruined now. कि चल ठीक है, अगर आदमी पहले मान ले 10 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था आफ्टर इंजीनियरिंग, मुझे नहीं पता क्या सैलरी होती है, जस्ट एन एग्जांपल, तो अब उसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ द न्यूज एंड एवरीथिंग. चल ठीक है, एटलीस्ट help him get back on his feet. कि चल ठीक है, तो एक काम कर, I'm working over here, I'll talk to my boss, I'll talk to the HR or whatever, and I'll get you a job for 5 lakh rupees, 6 lakh rupees, कि चल तू कुछ तो कर ले कम से कम. Women do that. And government helps them do that. कि चल ठीक है, and there are a lot of NGOs which are running specially for women. I like all of that. ठीक है, that is good. But then this is where that thin line comes, कि चल ठीक है, this is where I believe that women always say that they are victims. But to be honest, there are many cases where I believe that women carry a certain privilege in their life that men cannot even think about coming close to. There's a certain privilege that you carry when you are a woman, and I don't agree. And you cannot change my mind on this. Basically, that's what I'm trying to say. That when you're a woman, you have certain privileges over a man. You have certain privileges over the other genders, and you're just not willing to accept it. But you always want to sort of show yourself as the victim here. And there are two sides of feminism as well, which comes in this. I'll cut you here a little bit. There's one feminism which is like, chalo, theek hai, I want to join the army because men join the army. I want to do some hard labor work because men do that. I want to become a fucking pilot because men are becoming pilot. Like women who are actually challenging the tough parts of the society. Women who are actually challenging things like becoming an engineer, becoming a construction worker and stuff like that. I believe in that kind of feminism. Women who are joining the forces, women who are joining the armies, who are doing things that are actually difficult to live in. And then they're proving, what, I'm just as badass as you can be. Or even more. I love that. I love that women empowerment. And I'm quoting Jordan Peterson here. I'm actually speaking his words because I really like what he said. I love him. I don't understand why feminism, the majority of the feminism, is targeting very certain sections of power in the corporate world or in the real world for that matter. Why are they always wanting to reach at the areas where men have worked really hard to be able to reach? They say that, okay, there's a pay gap. I don't. Okay, so there's this thing in Canada. Unke parliament mein 50% are men and 50% are women. I don't understand the point behind it. I believe that such things should not be decided on basis of gender, but on basis of someone's qualifications. And that is where I believe. That feminism as a concept, which sort of reaches an extreme point, can be harmful for the society in the longer run. Because if you're hiring someone who takes 7 hours to do a thing, and then you have to hire someone who's taking 14 or 15 hours to do that exact same thing, then you're sort of creating a ruckus for your own business. Bro, the thing is, I don't believe in equality. I'll tell you how. Why? जो पूरा narrative है ना, men वो equal है ही नहीं. How? आज एक लड़की या मेरी मम्मा या whatever लड़कियां, what they go through ना, मैं उस चीज को सोच सकता भी नहीं. Right. I have accepted that. Same.
कि I know if my girlfriend, if my mother, if my sister, अगर वो एक महीने में they are having periods and everything, so it's my duty, ठीक है, कि मैं उनको जाकर ख्याल रखूं उनका, to ask them. You have to be, accepted that. You have to be a gentleman and be more civil. Be more civil. Of course. I have accepted that. कि as a man, it's my duty. Right. कि वो उस महीने में they are a bit weak, I should support them. Right. अगर मैं वो चीज एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि what they can do, I can't do. So why can't women do that? So the same. Right. एक बार थिंक अबाउट दिस. ये कहते हैं ना कि एक लड़की से कैसे बात कर सकता है. ब्रो ये क्या बात हुई? अगर तुमने कुछ गलत किया है, तुमने गलत किया है, that's it. ठीक है. That's अगर वो चीज मैं लड़की को बोल सकता हूँ, तो मैं तुमको ही बोल सकता हूँ. Right. Because I expect the same from you also. That is actually real equality if you think about it. I mean, you're saying that you don't support equality or you don't believe in it, but what you're talking about is actually equality. तो एक वो अलग कान ऐसे पकड़ो. हाँ. कान तो पकड़ रहे हो. कान तो पकड़ रहे हो. Right. एक बार मैंने एक I guess Instagram पे एक 1.5 साल पहले मैंने कुछ पोल डाला था कि अगर एक लड़के को लड़की बेफालतू में थप्पड़ मार रही है और उसने उसको वापस थप्पड़ मार दिया, is it wrong or not? Guys supporting feminism, nothing. Equality. Think? This is what I fail to understand every single time I'm thinking about equality or feminism, or every single time I'm talking about it, because there's a thin line that cannot be crossed, and there's no particular explanation for this. Because one place women are saying, okay, you know what, I want to be paid much higher than this guy. I want my gender to be represented as much the male gender is. I want this, I want that. Cool. Okay, if you want it, then why are you not fighting for the hard parts of being that gender then? Exactly. That is my question, basically, that, I don't understand the point where, DU or any state university college for that matter makes a college completely all girls. Why are you doing that? That is my biggest question. Why are you doing that? Because you're not promoting equality by doing this. ये चीज छोड़, normal colleges भी होते हैं, वहाँ पे उनको 1.5% off. हाँ, in Delhi University especially. तो 1.5% हमेशा उनका cut off कम आता है. Why? And if you're doing this, how are you supporting equality? I want to know that. This is not okay. So, एक sense में, if I'm calling you weak, if I'm talking to a woman, let's say, and I'm calling her weak because she cannot compete with me in the physical realms, she's getting offended by that. But if I'm giving some certain privileges to that particular woman because of her being a woman, I'm making the life a little bit easier for her. She does not have to study as much as I do. She does not have to score as well as I have to. She does not have to work that hard to get a job as much as I have to. Then why are they being happy about this realm where they are being called weak? Bro, this is where reservation also sort of comes in a little bit, because I'm like, if you want equality, then why do you want special rights? Bro, special rights and equality are not something that can sort of stay on the same line. Exactly. It's a completely different realm, right? आज हमारे mutuals में देख ले, the girls we are surrounded with. Right. I see them and I'm proud of them. Right. They're working hard. They're working hard. They're working very hard. They're harder than me. Yes. And they're not complaining about it. Very true. हमारे आसपास देखना. It's fortunate कि maybe we are surrounded by these kind of girls who are our friends, our close ones. Right. कि हमें लगता है कि bro reality तो ये है ना. Reality वो नहीं है कि जो उस लड़की ने किया उस लड़के अगेंस्ट अपना एक ट्रैफिक लाइट के इंसिडेंट में इंस्टाग्राम के पोस्ट डाल के. Right. वो सही नहीं है. Right. But पता है why this is where the confusion comes in, ना यार. This is where I believe that a man can never truly be a feminist. Like, I have a very certain thing. If you believe in equality, that's one thing. I believe in equality as well. But when you're talking about the extremism of feminism and you have some way or the other to defend it, and you're a man, you're doing it to get women. You're doing it to get laid. That's what I believe, to be honest. Matlab, there is no way, it's not possible for you to say that, you know what, this person, because she belongs to a different gender, there are some realms in life that are harder for her than it is for us. That too is very limited to a geographical location. That used to be the case in India 20 years back, but it's not as prevalent today as it used to be back then. So the society has progressed in that area. ठीक है, तो एक बारी को तो तुम कह रहे हो कि ठीक है, you need feminism, you need equality. Cool, I understand that. But then how are you supporting such things where in the name of feminism, you're actually portraying the other gender as weak and they're actually enjoying it? How does that make sense? Bro, सब छोड़. Why? Okay, listen. Why is it so कि औरतों को बस का किराया नहीं देना पड़ता है in Delhi? Why? What are you trying to portray? That they're weak? उसके बाद it does not. Okay, so उसके बाद ना everything becomes a charity. If women's schools, if special privileges for the women in the education sector, in the academic sector, in schools, in colleges, in offices, in corporate life, and schemes by the government exist. Uske baad, if you're pushing women to do better and to thrive better because of all of these exterior helps that they're getting from, then you're not helping them. You're giving them
giving this as charity. Bro, This is not empowerment. This is charity. That's what I feel. मेट्रो में देख, पहला कोच रिजर्व्ड है, चलो मैं मान ले रिजर्व्ड है, ठीक है. नॉर्मल कोचेस में, ठीक है, Why are women allowed? अगर ये होता ना कि फॉर प्रेग्नेंट वुमेन स्पेसिफिक हो, वो भी है, बट फॉर विमेन क्यों है? दैट इज माय क्वेश्चन. एक कोच दे दिया. जो लड़की बड़ा आयरॉनिकल है कि लड़कियां वहां जाती ही नहीं है, देखो वहां पे सीट मिलेगी नहीं. अरे मेरे को इतने मेरे फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे इतना बताई है ये चीज कि जब मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं मेट्रो पे जाती हूँ, कूल, मैं जानबूझ के मेंस कोच में आती हूँ. क्यों? लड़के सीट ऑफर कर देते हैं. हाउ इज दिस नॉट अ प्रिविलेज? मतलब अच्छा ठीक है, अब मेरी उन फ्रेंड्स से ऐसी कभी लड़ाई हुई नहीं, बिकॉज वी आर वेरी लाइक माइंडेड, बिकॉज दे एक्सेप्ट दैट बीइंग अ फीमेल ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस इन लाइफ. इफ यू आर फाइनेंशियली सेटल्ड, इफ यू बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली, उसके बाद देयर आर नो लिमिटेशंस ऑफ यू बीइंग अ वुमन, बिकॉज यू आर हैविंग द एग्जैक्ट सेम राइट्स, यू हैव द एग्जैक्ट सेम physical safety around you because of the money that you carry. And when you enter the society, you know that life is easier for you. So पता है ये चीज, this sort of really fucks my mind. और पता है the problem here is that this is just the beginning. मेट्रो में अपने कोच को छोड़ के जनरल कोच में आना, being a woman, because कि वहां पे when you're all women there is no special rights, because okay, if you're a victim, I'm also a victim, right? So मैं क्यों मैं नहीं हटूंगी तेरे लिए, right? But when you enter the general coach where there are men as well, you know that they will be more chivalrous to you. So yeah, I mean, I don't understand how that is acceptable. Getting it? Ki matlab, you want to be a victim, but you want empowerment as well. You're not walking on the same line. It's like saying, to give for the men to understand this, who go to the gym regularly, and also for the women who sort of decide to take care of their bodies and sort of push themselves in a physical manner. It's like saying that I want to eat junk food day and night for all of my meals, and then I want a six-pack as well. It is not possible. It is not humanly possible for you to say that, okay, I want empowerment as well, but then I want special rights as well. They are not similar things. Special rights are for weak people. They are not for people who are looking for power. If a person who's physically abled or a person who's mentally abled is getting some of the other sort of special rights, or even for people who are below the BPL line, especially in India, if they are getting special rights, that is understandable. But if you're saying that I want empowerment, then you need to work on yourself. It's like that. Why are you accepting these rights as a person? Bro, talking about dating sites. Not committed, so I काफी I wasn't. So basically, तो dating sites पे जा, वहाँ पे लड़की profiles देख, उनके जो prompts होते हैं, I want a guy for a long drive. I want a guy who buys me food. Swipe only if you're 6 feet and above. Yes. Bro, तो डाल के देख. I want a girl with this many specifications. I want a girl with these specific dimensions. You will get cancelled every Objectify कर रहे हैं हम. Exactly. Bro, मैं Uber वाला हूँ, गाड़ी चलाऊँ. मैं Zomato वाला हूँ, खाना लाऊँ. So bro, एक लड़की के पास वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है. नहीं पता ये चीज सच है. मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था 4 years back. नया कॉलेज शुरू हुआ, सबको आया भूत की चलो भैया टिंडर डालेंगे अपने फोन में, ये करेंगे वो करेंगे, कूल व्हाटएवर. मेरी एक दोस्त ने टिंडर डाला. शी सेड within the first half an hour of her making a Tinder account, she had more than 100 matches. Sorry, more than 100 likes, whatever. जो भी Tinder में होता है ना, like you right swipe तो match आता है. हाँ, so she had more than 100 likes. She said कि there's not a single guy that I have right swiped on right now जिसके साथ मेरा match नहीं हुआ. Not a single guy. And आधा घंटा हुआ था mind you. सिर्फ आधा घंटा. वो एक तो पूल इतना बड़ा है. Exactly. ठीक है. Exactly. 100 people तो कम कह रहा है. It's more than 2,000, 3,000 sometimes. In half an hour, in such in 1 day, 2 days. Wow. Because pool इतना बड़ा है. Right. ठीक है. आज as a guy, ठीक है, हमें तो बहुत चीज चेकलिस्ट करनी है ना. चल एक नॉर्मल एक स्टोरी, एक टाइमलाइन लेते लड़कों की लाइफ की. जब हम स्कूल्स में होते हैं, हमारी बैच की लड़कियां डेटिंग द एडल्ट पीपल, कॉलेज के या जॉब करते हैं वो. अटेंशन बहुत कम मिलती है. वी हैव लाइक फीमेल फ्रेंड्स. राइट. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान दे आर डेटिंग एंड मोस्टली पीपल आर नॉट डेटिंग गाइस. राइट. ठीक है. Then when they go to college, so उनकी भी स्कूल लड़कियां पढ़ती हैं. Then we think कि ये तो minor है. Right. So we can't do anything. Exactly. Plus no, I'll tell you something. Being a guy, मेरे जिन दोस्तों ने अपनी juniors को date कराया, I've called them a pussy. And I'll tell you, pedo, pussy, even if they are the legal age, they're above 18. I'm like, who the fuck dates juniors? If you're dating someone who's elder than you, you're a player. Exactly. But for women, that thing does not exist. एक लड़के की वैल्यू ना, I guess आती है जब he crosses the age of 24-25. एक बार see this, because तब वो लाइफ में सेटल्ड है. Right. ठीक है. तब he
probably is owning his own car, he's settled, he's not He's living in his dependent on own house, anyone. right? He's सब कुछ financially financially independent. like ये एज ब्रैकेट में, Right. बट वो जो लड़के इंडिपेंडेंट होते हैं इतने काम में बिजी होते हैं कि मेरी पूरी जवानी चली गई वेट करते हुए. Right. अब जब मुझे लग रहा है कि आई एम द बॉस नाउ, अब मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है. और जो मेरे पूल की लड़कियां हैं, जो मेरे एज की लड़कियां हैं, या तो की शादी हो रही है, ये ऑलरेडी कमिटेड है. Right. अब कौन बचा? छोटी लड़कियां. एंड गर्ल्स आर इनटू एडल्टरी. Yes, so that's the only thing that So, the only place that you अब can उस go to. टाइम पे क्या होता है कि जब लड़कियों के पास चॉइस थी बचपन से लेके अब तक कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड हटा, दूसरा आ गया, 10 ऑप्शंस है, बेस्ट फ्रेंड लाइक कर रहा है, पड़ोसी लाइक कर रहा है, टीचर लाइक कर रहा है तुमको फॉर दैट सेक. ठीक है. तब तुमने बड़ा जगल किया. और मैं मतलब अच्छे बुरे में बटे वो. Right. तो जब अब मेरा टाइम आया है तो व्हाई कांट आई हैव ऑप्शंस? Even I want options ना. You can never have options. That's the reality though. कोई options से बस आएंगे नहीं कभी. नहीं आएंगे. ठीक है. बट अगर फॉर दैट मैटर आ भी रही हैं, ठीक है, इफ आज तो लड़कियों को बोल कि यार क्या दोस्त तेरे पास आए कि मेरे पास 4 लड़कियां हैं, तो बोलेगा फक बॉय, प्लेयर, ये फलाना ढमकाना. उसको बोलेगा तुझसे घटे इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं. ठीक है. यार देख, मतलब this is where I disagree a bit. I'll tell you why. देख, I've been someone who's always been very, कि one needs to be honest in a relationship. Because ऐसा एक होता है कि it's not a gender thing, but I feel कि it's a mental emotional thing. कि चल ठीक है, if I get played by someone, I'll hate that. So I would hate to, make someone else go through that. ठीक है, especially if I am the one who's making them go through that. Getting it? कि मतलब if I am the cause of them suffering emotionally or mentally, or if I am basically the cause behind them going through some mental trauma that I went through at a particular time in my life, I would hate to be that person. So yeah, it's a gender thing for me, but I have seen a lot of, it's not a gender thing for me, but I've seen a lot of people who actually glorify this in men. If a person is able to basically pull more than one chick at a time, he's a player. That's what I've heard. Bro, this is a wrong thing at first. No, I've heard this. I'm just saying. It is wrong. I completely agree. Wrong तो even एक लड़की का भी लड़के का भी है, वो डिफेंड नहीं कर रहा मैं. बट मैं कह रहा हूँ कि किसी इंसान को बहुत टाइम बाद जाके वैलिडेशन मिलता है, ठीक है, तो वो चीज एंजॉय करे, तो भी इक्वली अगर या तुमसे ग्लोरीफाई कर लड़कियां करती हैं, ठीक है, या तो तुम उससे इक्वली हेट करते, लड़कियां वो हेट करते हैं. इट शुड बी लेवल हेडेड देन, मेरे ख्याल से ये चीज. बिकॉज एज अ गाय ना, अगेन कम बैक टू अ टॉपिक वी स्टार्टेड, नो वन आस्क कि तुम कैसे हो. Right. As a guy, no one gives a fuck about you, either if you are good looking or rich. Bro, I say this thing, pretty guys goes nowhere. हमारी कोई क्या करोगे? तो तुम जिम कर रहे हो, ठीक है, तुम अपने आप पे लुक्स को अपने ग्रूम कर रहे हो, you're doing for yourself. Right. Because ऐसा फैक्ट है, कितने क्लब में जाओ, you see कि बहुत like normal under, मतलब जो ज़्यादा handsome नहीं है. People who are not physically attractive. Right. So एक वो भी इनसिक्योरिटी रहती है. अपने आप को बेटर करना है. उनके साथ you have to be financially good also. फिर अपने पेरेंट्स भी हैं, they're getting old. Right. फिर उसके बाद you have to just maintain a social decorum also. Right. आज मैं 24 साल का हूँ, ठीक है. My life की priorities की I have to buy a house by the age of 30-32. I have to have this car. ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है. ऑप्शंस नहीं है. Right. आज अगर these are not things that you aspire to be. These are things that you know that you have to. Right. That there's no if or but in this. Exactly. अगर मैं 35 years का हूँ, 40 years का हूँ, ठीक है, if I'm sitting in a society, so they'll judge me by my achievements, मैं क्या क्या किया है. Right. Either they'll demean me, मेरा success ही यही है. So for me, being successful, financially successful, is the only option. Right.